Well, I hope you are able to see this word file as well. And today we are going to discuss about the ecological approach to history. And the very important person who has made a significant contribution to this kind of approach to history is Ramchandra Guha. So ecology, in a nutshell, is a study of interaction between human being with its environment. We interact with our surrounding, with the forest, with the river, with the mountains, and this interaction is a main subject matter of the ecology. And history, in annals, we have already studied ecological determinism. We have already studied it is the ecological condition, environmental condition, geographical condition that shape history to the greater extent. So history is all affected by environment, and at the same time, human action it affects environment as well. Like we see the problem of pollution nowadays because of the rapid industrialization, deforestation, constructions of dam, rapid spread of agriculture. All these things have affected the environment because of the human action. For example, in US now, the earlier forests were all cut down, and we have a very huge uh, tract of where wheat are cultivated. And that is generally known as wheat desert, because if the storm comes, there will be no trees to stop the storm. And obviously industrialization and urbanization, and in the modern period, this effect of human activities on environment became more prominent. Now, environmental history we study in a way to understand that which way the civilization and environment is interacting with each other. Donald Worcester, he was a US scholar, and he gave a framework for the ideas of ecological history in his book Nature's Economy, A History of Ecological Idea. And he says that human greed is responsible for degradation. And then Rachel Carson's book Silent Spring, it makes us aware about the environmental degradation in US. But the very important person for us is Ramchandra Guha, who was born in 1958 at Dehradun. He studied economics at St. Stephen and then went to IIM Kolkata, where he earned his PhD on social history of forests. Then he taught at Stanford, Yale, California, and of course, Indian Institute of Science at Bangalore. And he is known as historian, author. He writes on environment, social, political, and cricket history. There are a number of books that he wrote. I'll be just talking about few books that is related to his contribution as a environmental historian. The Unquiet Wood, Ecological Change and Peace and Resistance in Himalaya, The Feathered Land, The Ecological History of India, that he co-authored with Madhav Gadgil, and then Anthropologies Among Marxists, How Much Should a Person Consume, Thinking Through the Environment, then Ecology and Equity, again he co-authored with Madhav Gadgil, and environmentalism of global history. And then India after Gandhi. Of course, this is not a book related to environment, but this is one of his famous books. The book Unquiet Wood is a kind of pioneer in this. He discusses how the colonial forest, during the British period, how what was the forest policy of the Britishers, and this forest policy it has caused a lot of environmental dislocation in the Uttarakhand region, and because they the colonizer, the Britishers, they planted such kind of tree which were not ecologically sustainable, and they wanted to sell that tree to the commercial company. And when the people resisted, there was conflict. And he discussed in graphic detail about the movement that was launched by the people to protect the forest, as well as later on, in the post-independence period, we have Chipko movement, which was launched to protect the forest. And this the attitude of the colonial people is obvious in the bureaucracy, bureaucratic correspondence and record, where the villagers are considered to be responsible for deforestation. And it was villagers, though they cut the forest, but the number of trees that were cut by them were much on the lesser side. They didn't need it only for the cooking their food, or maybe for the construction of the houses. But the forest that is cut by commercial company with machines, it was on a huge scale, on a huge number. But instead of blaming these people, the colonizer and the merchants, for the deforestation, the general British bureaucracy seems to be blaming the villagers. And Ramchandra Guha, through his study, he proves the point that
it was the railway expansion and the world wars that were mainly responsible for deforestation. Earlier, nowadays we have cemented plank on which we lay the railway track, but earlier it used to be the wooden plank on which we used to lay the railway track. Is there anybody from Hindi medium? If there is somebody from Hindi medium, just put a message. Otherwise, I'll continue in Yes, sir. English. Who is there? Shraddha? Yes, sir. ओके ओके हाँ ठीक है श्रद्धा अभी इस बात को ध्यान रखो whenever you join the class you put a message that I am from Hindi medium so that I will know क्योंकि मैं जब क्लास लेता हूँ आप सब मुझे दिखाई नहीं देते हो I don't see all of you guys all right Okay, sir. Okay, thank you. Okay you can switch off your mic well okay तो ये जो किताब थी अनक्वाइट वुड इसमें रामचंद्र गुहा ने इस बात को साबित किया है कि जो डिफॉरेस्टेशन जो हुआ है जो जंगलों की कटाई हुई उत्तराखंड रीजन में उसके लिए जिस तरीके से ब्रिटिश जो अधिकारी थे वो हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि विलेजर्स गांव वाले जो है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है जंगल कटाई के लिए लेकिन रामचंद्र गुहा ने अपने डाटा से अपने स्टडीज से यह प्रूव किया है कि उनसे ज्यादा फॉरेस्ट ये कमर्शियल कंपनियां काटती थी या फिर ब्रिटिशों की जो पॉलिसी थी रेलवे के लिए उनको लकड़ी की जरूरत पड़ती थी और वर्ल्ड वॉर के समय भी लकड़ी की जरूरत पड़ी तो वो एक महत्वपूर्ण कारण था कि जिसके कारण यहाँ पर उत्तराखंड रीजन में देयर हैड बीन अ लार्ज नंबर ऑफ डिफॉरेस्टेशन वेल ओके उनकी जो नेक्स्ट किताब है दिस फीसर्ड लैंड द इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फीसर्ड मतलब क्या जो आमतौर पर हम लोग देखते हैं जो काली मिट्टी होती है उसमें अगर बारिश नहीं आती है बहुत दिनों तक सूखा पड़ जाता है तो उस पे क्रैक आने लग जाते हैं सो दैट इज कॉल्ड फीसर्ड लैंड दिस इज co-authored with Madhav Gadgil and this talks about ecological history of India and it examines sustainable and unsustainable use of natural resources and their effect so from the first human in the beginning through the different stages that civilization has developed like man was hunter gatherer then farmer and then empires were built and then the British Raj came in India so in the first part he introduces the concept of mode of resource use accordingly there are 4 mode of resource use gathering and shifting cultivation where resources were used in a different manner very less impact on the environment nomadic pastoralism now the impact has become more because now you have people are moving from one place to another place with their cattle and still the ecology was sustainable then settled cultivation now agriculture came and it was during the phase of rapid expansion of agriculture that there had been a large number of cutting of forest to clear the land for the agriculture खेती के लिए जमीन खाली करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर जंगलों को काटा गया जब भारत में एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो गया और उसके बाद में फिर आता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी जिसमें कि हमने हार्म बहुत अधिक किया वी हार्म एनवायरनमेंट टू द ग्रेटर एक्सटेंट अर्बनाइजेशन शहरीकरण बहुत हो गया लोग शहरों में आके बसने लगे शहरों के आजू बाजू के सारे जंगल जो है वो काट के नष्ट कर दिए गए और वहां पर शहर बढ़ते चला गया so this is a different use जिस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं वो पैटर्न अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से होता है ये वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं और टेक्नोलॉजी इकोनॉमी सोशल ऑर्गेनाइजेशन आइडियोलॉजी ये सारा इकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है there is a conflict between the mode अलग अलग जब मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है तो there is a conflict for example जो ग्रेजिंग करते थे कैटल को उनको पूरा ग्रेजिंग लैंड चाहिए होता था और जब एग्रीकल्चर शुरू हो गया तो लोगों ने एग्रीकल्चर लैंड वहां पर कल्टीवेशन शुरू कर दिया एंड देन they stop these people from grazing their cattle in the agriculture land so that led to the conflict similarly जब अर्बनाइजेशन होने लगा तब अर्बन लोग भी जो है दे स्टार्टेड इंक्रोचिंग ऑन द फॉरेस्ट एंड दैट लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल एंड द अर्बन पीपल he also talks about the ecological importance of the species अलग-अलग species अलग-अलग जो जीव जंतु होते हैं उनका importance बहुत होता है ecologically certain area is ecologically very sensitive and the part 2 of the book it discusses ecological events in the history of India it argues that the replacement of early hunter-gatherer society with extensive agriculture one and this led to the environmental crisis during the 4th century CE so hunter-gatherer से जब लोग agriculture शुरू उन्होंने किया वाइड स्प्रेड एक्सपेंशन जब एग्रीकल्चर का हुआ तो देयर वाज एन एनवायरमेंटल क्राइसिस
And gradually, village level conservation system is developed. The growing environmental awareness, we find that environmental awareness, environmental consciousness in the Buddhist and Jain teaching. And they teach like non-violence, vegetarianism, practice of mixed agriculture, domestication of animal, and this is still prevalent. So, they in a environmental protection in some way is being इंटीग्रेटेड विद द रिलीजियस फिलोसॉफी के साथ में भी बहुत सारा भारत में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करना एक आइडिया है जो कि रिलीजियस फिलोसॉफीज के साथ में इंटीग्रेटेड किया हुआ है. पार्ट 3 जो है इट एग्जामिन्स इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ब्रिटिश रूल. कॉलोनियल जो फॉरेस्ट्री होती थी that led to the destruction of village because the village economy which was based on forest, the forests were being now policies. They prevented villagers from taking anything from the forest, and that had badly impacted the village life. There was no centralized conservation strategy, and this book argues that this is a major reason behind the ecological problem. So, the main ecological problems that we face, it emerged during the colonial period. Then finally, in this book, a study of industrial and state forestry is made, and they conclude that there is a concept called social forestry. Social forestry means the people of the village will be combinedly made responsible for the cultivation, for the preservation of the forest near to that village. That is called involvement of society in the protection of the forest. And this has proved to be more effective than the government policy. The concluding chapter says that it is too early to say whether a new, more sustainable mode of resources can be developed to present the environmental crisis. And this is, because given the complexities of ecological communities, prescribed prescription is very difficult. The environmental problem and the issues related to it are very complex. So having a very standard formula for the protection of the environment is pretty difficult. Now his next book, that is How Much Should a Person Consume, Thinking Through the Environment, and he makes a comparative study of environmental problem of USA and India. So USA, he says, is a different ecology because their population is very less in comparison to the huge land. USA is 2.5 times more than India in the geographical area. So, and at the same time, there are a lot of environmental controversies in India, like what environmental harm that is happening because of the large dam, state forest, wildlife reserve. And next, he raises a question: how much should a person or country should consume? The more country consume, the more environmental harm it causes. And this book also provides information about the environmentalists like Chandi Prasad and Madhav Gadgil. The next book is Environmentalism, A Global History. Here also he makes comparative in environmental study of USA, Soviet Union, China, India, Africa, and Brazil. And he said that environmental concern is mostly industrialized, the problem of the industrialized world. Because in the medieval period or in the ancient period, we don't have the environmental crisis to such a large extent because population was less and there was no industrialization, very less urbanization. And now, because of the consumerism, people want to consume more and more. More and more you consume, it is considered as the mark of being a developed country, and that led to the lot of in fact problem. So here in this book he talks about the three way of environmentalism, and he says that the first way of environmentalism is being conscious about the protection of the environment. That is what is called environmentalism. So he says that the first wave of environmentalism that came to India around 1920s and 30s, and he says that around 1930s especially, Indian people, they became conscious that the Britishers are going to leave us. Now, after the Britishers, they left India, what kind of developmental policy should be followed was being debated and thought about by the people like Mahatma Gandhi and many people. There was a very interesting person, J.C. Kumarappa, and in 1939 itself, he wrote a book titled The Economy of Permanence. And, Mahatma Gandhi, J.C. Kumarappa, Miraben, through their writing,
they urge the people that once the Britishers leave us, let us not follow the developmental model of the West. वेस्ट में जिस तरीके का विकास किया है, इंडस्ट्रीज बहुत बड़े पैमाने पर बनाई है, उस तरीके का डेवलपमेंट, उस तरीके का विकास भारत में नहीं चलेगा, क्योंकि भारत में लोक संख्या बहुत ज्यादा पैमाने पर है। अगर हम उस तरीके का विकास करेंगे तो हमारे जो साधन सामग्री है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी, और बाकी आने वाली पीढ़ी के लिए यहाँ कुछ नहीं बचेगा। बहुत ज्यादा पैमाने पर यहाँ पर पॉल्यूशन फैलेगा। यूरोपियन कंट्रीज का एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो था कि उनकी इकोनॉमी जो थी, उनकी अर्थव्यवस्था जो होती थी, वो कॉलोनीज के ऊपर आधारित होती थी। कॉलोनीज से उनको रॉ मटेरियल जाता था, इंडिया जैसे कॉलोनीज से, और कॉलोनीज में उनका जो तैयार सामान था वो बेचा जाता था। तो बिना कॉलोनीज के उनकी इकोनॉमी सस्टेन नहीं हो पाती थी। तो महात्मा गांधी और उनके विचारों से जो सहमत थे, वो ये कहते थे कि उस तरीके का डेवलपमेंट मॉडल हमें इंडिया में नहीं चाहिए। अगर हम उस तरीके से करेंगे तो वी विल बी स्ट्रिपिंग अर्थ नेकेड ऑफ इट्स ऑल रिसोर्सेज। हम लोग अर्थ से, अपनी जमीन से सारे रिसोर्सेज समाप्त हो जाएंगे तुरंत ही। लेकिन गांधी जी की इन बातों को लोगों ने नहीं माना। 1947 में जब हमें आजादी मिली, तो हमें वी वेर आवर पॉलिसी मेकर्स, दे वर इन अ हरी टू कैच अप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड दे embark ऑन द सेम डेवलपमेंटल मॉडल दैट इज फॉलोड बाय द वेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कैपिटल इंटेंसिव एंड रिसोर्स इंटेंसिव, जिसमें रिसोर्सेस का बहुत ज्यादा पैमाने पर इस्तेमाल होता है। वैसे डेवलपमेंट मॉडल हमने शुरू किया, बहुत ज्यादा पैमाने पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाई, बड़े बड़े डैम बनाए, और उसका हमें रिजल्ट भी मिला। उसका हमें उसके कारण हमें यहाँ पर जो प्रोडक्शन है काफी बढ़ने लगा, लोगों का रहन सहन थोड़ा सुधरने लगा। लेकिन उसके जो बुरे परिणाम थे, ये रिसोर्स इंटेंस डेवलपमेंट के, जो कि हमने 1950s में शुरू किया 5 years प्लानिंग के साथ में, तो उसका जो बुरे परिणाम थे वो हमें 1970s में दिखाई देने लगे, करीब करीब 20 साल बाद। और 1970s में हम लोग देखते हैं, सो फर्स्ट वेव ऑफ एनवायरमेंटलिज्म वाज अराउंड 1920-30s, जो कि लोगों ने नहीं मानी। गांधी जी और उसके विचारवंत इसके बारे में कहते रह गए, लेकिन बाय एंड लार्ज ये जो फर्स्ट वेव ऑफ एनवायरमेंटलिज्म जो थी, वो किताबों में बंद रह गई। फिर सेकंड वेव ऑफ एनवायरमेंटलिज्म जो आई, वो 1970s में आ गई। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पीपल एज द पीपल बिकेम मोर कॉन्शियस ऑफ started a movement them they started a lot of movement against the government policies, and we see that 1970s we have a lot of environmentalist movement in India, and this he calls it as a second wave of environmentalism in India. And उसी का परिणाम हुआ 1970s का, इस environmental consciousness, मेधा पाटकर की मूवमेंट थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन आया। तो उसी के कारण हम लोग देखते हैं कि 1980s में गवर्नमेंट बिकेम कॉन्शियस अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द environment, and environmental studies it started in many institutions, many universities. It started giving encouragement to environmental research, and here Ramchandra Guha, he makes a comparison between the environmentalism in USA and environmentalism in India. वहां पर जो पर्यावरण को बचाने का जो आंदोलन था, वो इंटेलिजेंस से शुरू हुआ था और बाद में लोगों ने उसको अपना लिया। उदाहरण के तौर पर जैसे 1962 में अमेरिका में एक किताब पब्लिश हुई थी, साइलेंट स्प्रिंग, और उस साइलेंट स्प्रिंग से जो केमिकल पोल्यूशन होता है उसका किस तरीके से असर लोगों के ऊपर पड़ता है, उसका विश्लेषण दिया गया था। और उस किताब के बाद में वहां पर आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर रामचंद्र गुहा कहता है कि लोगों के बीच में आंदोलन पहले शुरू हुआ, और उसके बाद में उसको इंटेलिजेंसिया हैज टेकन दैट अप एंड दे स्टार्टेड स्टडिंग. So it was he says that it is an environmentalism from below. That is what he says about India. और उस समय जो भी इन्वायरमेंटलिज्म की बात करता था जनरली शुरू में, उसको एंटी इंडियन, एंटी डेवलपमेंट कहा जाता था। वो कहा जाता था कि ये ही इज अ फॉरेन एजेंट एंड सो एंड सो फोर्थ। लेकिन अभी ये था सेकंड वेव ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म 1970s में जो आया। 1920s का 30s का हमने देखा, जो कि केवल किताबों में रह गया, गांधी एंड हिज फॉलोअर। 1970s में इट केम फ्रॉम द ग्रास रूट, लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन। अभी 1991 के बाद में 1991 के बाद में देयर इज अ पीरियड ऑफ लिबरलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म हो गया, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज बनने शुरू हो गई, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, और उसके कारण लोगों के रहन सहन काफी सुधरने लगा। पहले मुझे याद है, जब मैं छोटा था, जब बचपन में बहुत कम तरह की कारें रास्ते पे दिखाई देती थी। एम्बेसडर हुआ करती थी या फिर फियाट हुआ करती थी। बाद में फिर मारुति आई, और उसके बाद में हम लोग कहते हैं वी हैव लार्ज नंबर ऑफ चॉइसेस नाउ। स्कूटर एक दो हुआ करती थी, बजाज चेतक और लैम्बर्टा। नाउ वी हैव लार्ज नंबर ऑफ टू व्हीलर्स।
और बहुत कम लोगों के पास में उस समय कार हुआ करती थी। कार होना मतलब बहुत सुपर रिच कोई आदमी होता था जिसके पास में कार होती थी। आजकल ये आम बात हो गई है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम मिडिल क्लास दे कैन हैव एक्सेस टू द कार, फोर व्हीलर। तो लोगों का रहन सहन काफी अच्छे से सुधर गया है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पहले की तुलना में 1991 का पहले का पीरियड जो था, 1991 के बाद का जो पीरियड है, उसके रिजल्ट्स हमें दिखाई देने लगे हैं। लेकिन इसके कारण हम लोग एनवायरमेंट को भी बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर हार्म करते जा रहे हैं। तो ये जो थर्ड वेव जो है वो अभी नहीं आई है, लेकिन रामचंद्र गुहा कहते हैं कि थर्ड वेव इज लाइकली टू कम, where the people will become more conscious about the environmental concern, more conscious about the environmental issues and the environmental harm that we are doing to our environment. And then this third wave will be like a combination of the grassroots level people as well as intelligence. थर्ड वेव जो होगी वो कॉम्बिनेशन होगी। एंड we will again remember Mahatma Gandhi, who said that India should not develop after the manner of the West. जिस तरीके से वेस्ट ने डेवलप किया, इंडिया ने उस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट हिज बुक एंड हिज important contribution. We have studied about the different books that he wrote, the Unquiet Woods, Switzerland, Anthropologies. ये तो हमने स्टडी नहीं किया, जरूरत नहीं है। How much should a person consume? एनवायरमेंटलिज्म, इसमें तीन वेव ऑफ एनवायरमेंटलिज्म ये उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस जो कुमारप्पा की किताब थी, उसको भी आपको याद रखना है, बिकॉज यू विल बी गेटिंग एमसीक्यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जनरली। एंड रामचंद्र गुहा अपनी किताब में, ही इज नॉट ब्लाइंड इन्वायरमेंटलिज्म। जैसे कोई ब्लाइंड इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं ना, वो कहते हैं लोगों के साथ में कुछ भी होने दो, लोगों को मरने दो, एनवायरमेंट बचना चाहिए, जंगल को बचना चाहिए। तो ये रामचंद्र गुहा इस तरीके के इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं है। ही अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। वो ये कहता है कि जंगल में जो आदिवासी रहते हैं वो तो जंगल की लकड़ी से अपना खाना बनाते हैं। अगर उनको जंगल से लकड़ी लेने के लिए मना करना है, प्रिवेंट करना है, तो वी हैव टू थिंक अबाउट द वे बाय विच दे कैन कुक देयर फूड। वी हैव टू आल्सो थिंक अबाउट हाउ वी कैन प्रोवाइड क्लीन वाटर टू देम। So it is a practical problem that he tries to discuss and address, and that is the reason he says that the environmental concern of USA and India are different. USA very less population, and they can easily cater to their population. So this is where the environmental approach to history ends. This topic ends here. It was not a very big topic. In case you are having any doubt, you can ask me now. All right. Well, okay. I wanted to ask you one thing. Can we join in the evening for class again at 4 o'clock?